हे गाइस, आज हम जल्दी से सीखेंगे ये 8 फैंसी इडियम्स। अगर आप इन इडियम्स का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तो ट्रस्ट मी, योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स विल बिकम वेरी इंप्रेसिव। तो स्टार्ट करते हैं। सी आई टू आई, इट मीन्स टू अग्री, बी इन फुल अग्रीमेंट, पूरी तरह से मुत्तफिक होना। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज सीइंग आई टू आई विद योर वाइफ अबाउट हाउ टू स्पेंड मनी। इसके बाद है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस रिपेयर हैज कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। टू कट कॉर्नर्स, इट मीन्स टू डू समथिंग बैडली, सब स्टैंडर्ड काम करना, गैर मेयारी काम करना। फॉर एग्जाम्पल, cutting corners in production led to definite loss in the product quality. A stone's throw, it means very close, बहुत करीब. For example, the high school is just a stone's throw from his house. Blow off steam. Blow off steam means to release some stress, ज़हनी तनाव से छुटकारा हासिल करना, टेंशन दूर करना. For example, I went on a run to blow off some steam after a fight. Call it a day. It means stop working. उस दिन के लिए आप वो काम ख़त्म कर देते हैं. For example, the teacher called it a day after chapter 4. Cold feet. Cold feet means to get nervous. Nervous हो जाना, परेशान हो जाना. For example, he got cold feet before his turn to sing a song. Eat a horse. Eat a horse means be very hungry, starving, शदीद भूख लगना. For example, I am so hungry that I could eat a horse. I believe you have enjoyed learning these 8 fancy idioms. Thank you.